मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने घर में और आप सब लोग एक अच्छी हेल्थ में होंगे। एंड टुडे वी विल बी स्टडिंग वन चैप्टर दैट इज जेंडर। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स, बिकॉज we always see both these options whenever we are filling any academic form, any entrance form. Sometimes we are filling our diary form, sometimes we are filling the forms for our identity cards. So there are two options. Now for your concern, it's very important to know कि किस फॉर्म में जेंडर लिखा होता है और किस फॉर्म में सेक्स लिखा होता है। देखिए, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट जहाँ पे हमें ये पता होता है कि ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, ये थर्ड जेंडर जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, दैट बिलोंग्स टू एलजीबीटी कैटेगरीज, वो है। बट whenever an infant is born in a hospital, as you can see, उस फॉर्म में कभी भी जेंडर नहीं लिखा होता है, उस पे हमेशा सेक्स लिखा होता है, बिकॉज देर आर ओनली टू ऑप्शन, दैट वेदर इट्स अ मेल, वेदर इट्स अ, but in case of gender, there are three options which are mentioned. Sometimes it's four also. That is a common gender, neutral gender, जिसको हम बोलते हैं. Then it's transgender, then male and female. Because gender is a social construct, whereas this sex is a biological construct. क्योंकि उस टाइम पे जो बेबी बॉर्न होता है, it can be a boy, it can be a girl, right? Because it's a biological concern, it's a biological construct. So gender is a social construct whereas sex is a biological construct. But today we will be studying about gender. Gender में भी क्या होता है? It belongs to male or female. So let's just begin with it. It's gender. Gender of a noun. Noun का ही होगा भाई, obviously, क्योंकि noun क्या है? Naming word है. और pronoun it will tell कि whether it belongs to male, female or some other class. कि male है, female है या फिर कोई other class है. Kinds of gender. The first is the muscular gender. Muscular gender मतलब female को denote करेगा. It will represent the male and it is known as muscular gender, like grandfather, man, boy, uncle, right? Whereas feminine gender are those that represents the females, जैसे कि grandmother, woman, girl and aunt. Uncle, aunt क्या होती है? मासी और उनके husband. Moving on to the next is common gender. जो बिल्कुल common है. It can be both male as well as female. So they are known as common gender. Like a teacher. A teacher can be a male and a female. Doctor can be a male and a female. Engineer can be a male and a female. Security guard can be a male and a female. जैसे कि teacher, doctor, painter, artist, engineer, right? Moving on to the next is neutral gender. Neutral gender represents the non-living things. दे आर नोन एज न्यूट्रल जेंडर। अब आप बैग में क्या क्या कह सकते हैं कि बैग क्या है? बैगवती है या बैग है ये? तो इट्स, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट्स एज अ मेल एंड अ फीमेल, राइट? देन बॉक्स and then pencil. So it's just a brief introduction, brief chapter giving you an explanation that what are genders and gender के types दिए हुए हैं. But whenever you are seeing the word sex, the biological construct, and this is actually social construct. Make sure that you will read this chapter properly and you will do these exercises on your own, and keep smiling, stay hydrated. Thanks.